Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Kira Giridhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Gira Vanachari Yamuna Gira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya So we are reading today from Canto 1, Chapter 17, Text 24. Tapa Shaucham Daya Satyam Iti Padha Kritaye Krataha Adharma Shestrayo Bhagna Smaya Sangha Madestava Tapah Shaucham Daya Satyam Iti Padha Krite Krataha Adharmam Shestrayo Bhagna Smaya Sangha Madestava Tapah Shaucham Daya Satyam Iti Padha Krite Krataha Adharma Shestrayo Bhagna Smaya Sangha Madestava Tapo Saucham Daya Sattam Pada Kite Kritaha Adharma Kamcho Istrayo Bhagna Changam Vaistava
Mataji's. Word to word meaning, translation, and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Tapaha, austerity. Shaucham, cleanliness. Daya, mercy. Satyam, truthfulness. Iti, thus. Padaha, legs. Krite, in the age of Satya. Kritaha, established. Adharma, irreligiosity. Amshay, by the parts. Traya, three combined. Bhagnaha, broken. Smaya, pride. Sangha, too much association with women. Madhe, intoxication. Tava, your. Translation. In the age of Satya, truthfulness, your four legs were established by the four principles of austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness. But it appears that three of your legs are broken due to rampant irreligion in the form of pride, lust for women, and intoxication. The deluding energy or material nature can act upon the living beings proportionately in terms of the living beings falling prey to the deluding attraction of Maya. Moths are captivated by the glaring brightness of light and thus they become prey to the fire. Similarly, the deluding energy is always captivating the conditioned souls to become prey to the fire of delusion. And the Vedic scriptures warn the conditioned souls not to become prey to the delusion, but to get rid of it. The Vedas warns us to not to go to the darkness of ignorance, but to the progressive path of light. The Lord Himself also warns that the deluding power of material energy is too powerful to overcome, but one who completely surrenders unto the Lord can easily do so. But to surrender unto the lotus feet of the Lord is also not very easy. Such surrender is possible by persons of austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness. These four principles of advanced civilizations were remarkable features in the age of Satya. In that age, every human being was practically a qualified Brahmana of the highest order, and in the social orders of life, they were all Paramhamsas or the topmost in the renounced order. By cultural standing, the human beings were not at all subjected to the deluding energy. Such strong men of character were competent enough to get away from the clutches of Maya. But gradually, as the basic principles of Brahminical culture, namely austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness, became curtailed by proportionate development of pride, attachment for women, and intoxication, the path of salvation or the path of transcendental bliss retreated far, far away from human society. With the progression of the age of Kali, people are becoming very proud and attached to women and intoxication. By the influence of age of Kali, even a pauper is proud of his penny. The women are always dressed in an over attractive fashion
to victimize the minds of men, and the man is addicted to drinking wine, smoking, drinking tea, and chewing tobacco. All these habits or so-called advancement of civilization are the root cause of all irreligiosities, and therefore it is not possible to check corruption, bribery, and nepotism. Man cannot check all these evils simply by statutory acts and police vigilance, but he can cure the disease of the mind by the proper medicine, namely advocating the principles of Brahmanical culture, of the principles of austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness. Modern civilization and economic development are creating a new situation of poverty and scarcity, with the result of blackmailing the consumers' commodities. If the leaders and the rich men of the society spend 50% of their accumulated wealth mercifully for the misled mass of people and educate them in God consciousness, the knowledge of Bhagavatam, certainly the age of Kali will be defeated in its attempt to entrap the conditioned souls. We must always remember that false pride or too high an estimation of one's own values of life, undue attachment to women or association with them, and intoxication will divert human civilization from the path of peace. However much the people clamor for the peace in the world, the preaching of the Bhagavatam principles will automatically render all men austere, clean both inside and outside, merciful to all suffering, and truthful in daily behavior. That is the way of correcting the flaws of human society, which are very prominently exhibited at the present moment. Hare Krishna. Proceed. Yes. इसको वाईफाई से कनेक्ट कर लो हाँ ये वाईफाई से कनेक्ट कर दो इसको ये सब ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। So, welcome on behalf of Shri Shri Radha Govind and Mandir ISKCON Balkun Temple to all the devotees and seeking blessings. What a wonderful day. बहुत ही शुभ दिन चल रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस करती है शुभ दिन आएंगे, हमारे चल रहे हैं। कल बलराम जयंती एंड आने वाले कुछ दिनों में जन्माष्टमी, राधा अष्टमी एंड देन राधा रानी के अष्ट सखियों का अपीयरेंस डेज। सो व्हाट वंडरफुल सेलिब्रेशंस वी आर हैविंग। एंड देन शिला प्रभुपाद's appearance day, and today is the very historic day when Prabhupada departed for US. So perfect day and a perfect verse to glorify and talk about Prabhupada. So I seek blessings of all the devotees. I can what I can glorify about Prabhupada, but whatever Prabhupada said, we may be imperfect, but whatever we will speak, basis whatever we have heard from our Guru and Acharyas, will be perfect. So recently, मेरा सौभाग्य था, मेरा एक बहुत तीव्र इच्छा थी काफ़ी सालों से कि मुझे यूएस जाना है। यूएस पहले गया हुआ हूँ मैं, लेकिन मुझे न्यूयॉर्क जाना था, जहाँ पे प्रभुपाद ने ये पूरा मूवमेंट स्टार्ट किया। टॉम्किन स्क्वायर पार्क, 22nd एवेन्यू, एंड आई वांटेड टू गो टू न्यू वृंदावन, वेस्ट वर्जीनिया। सो by the grace of my company and my boss, I got that opportunity. So wherever I went, I prayed for them. So तो मैं जब वहाँ पे हम लोग गए और देखा हमने, तो मेरे साथ हमारे एक भक्त है, उनका नेफ्यू था। ठीक है, ही इज वेरी नाइस पायस पर्सन एंड ही वॉज अकम्पनिंग मी एंड ही टुक मी अराउंड। तो उसने भी पहली बार 22nd एवेन्यू देखा अंदर से, एंड हम लोग ने पूरा वो टूर लिया, एंड देन वी वर ड्राइविंग। तो ही आस्क्ड मी वन क्वेश्चन, बोले अंकल या प्रभु जी जो भी है, प्रभुपाद अमेरिका आए क्यों? हाँ, नाइस क्वेश्चन ना, कि आए क्यों? तो इसलिए ये जो वर्स है वो बहुत रिलेटेड है कि प्रभुपाद अमेरिका गए क्यों या आए क्यों। तो प्रभुपाद क्यों गए, किस मूड में गए, क्या करने गए, ये प्रभुपाद ने खुद बताया अपने पर्पट्स के थ्रू और अपने प्रेयर्स के थ्रू, जो आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कल से थोड़ा कनेक्ट करेंगे, कल बलराम जयंती थी, राइट? सो लॉर्ड बलराम अपीयर्ड इन कलयुगा इन द फॉर्म ऑफ नित्यानंद प्रभु, ओके। एंड लॉर्ड चैतन्य ने उनको आदेश दिया कि निताय, नित्यानंद, गो होम टू होम, हाउस टू हाउस, एंड सबको कृष्ण के बारे में बताओ, सबको बताओ कृष्ण का नाम जप करने के लिए, सबको बताओ कृष्णा इज योर फादर, कृष्णा इज योर रियल मदर, कृष्णा इज योर वेल्थ। तो जाओ बताओ।
तो so Nityanand Prabhu took that instruction as his life and soul. And same Balram ji, right? जो सेम नित्यानंद प्रभु जो बलराम के रूप में आए थे, और उन्होंने क्या किया, जब रोमहर्ष जब भागवतम पाठ करने के लिए या प्रचार करने के लिए व्यास आसन पे बैठे थे, और जब उन्होंने प्राइड दिखाया, जब बलराम जी आए और रोमहर्ष खड़े नहीं हुए, ठीक है, लंबी कहानी है वो, उसको शॉर्ट करेंगे, तो बलराम जी ने क्या कहा, सब लेसन सिखाने के लिए एक घास का तिनका लिया और उनको मार दिया। वही बलराम जी जब नित्यानंद प्रभु के रूप में आए तो घास का तिनका लेके घूम रहे हैं, लेकिन उस घास का तिनका लेके क्या कर रहे हैं, अपने मुंह में दबा रहे हैं और सबसे प्रार्थना कर रहे हैं। कल मैं महाराज का क्लास सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि नित्यानंद प्रभु वॉज बेगिंग, तब जब लोग उनको भगा देते थे या प्राइड से क्या बोलते हैं, they used to shoo him away or mistreat him. So that Balram, which killed Romaharsh with the what do you say, blade of grass, नित्यानंद प्रभु वो ब्लेड ऑफ ग्रास में लेके अपने मुंह में लेके लोगों से बेग कर रहे, प्रार्थना कर रहे। और महाराज ने बताया कि एकदम यूनिक तरीके के बेगर है वो। अगर आप सोचिए, आप ट्रेन में जा रहे हैं या गाड़ी में जा रहे हैं बॉम्बे में, आप सिग्नल पे रुके हैं और कोई भिखारी आएगा और ठक 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 करेगा और क्या बोलेगा, अरे मेरे पास 1 करोड़ रुपया ले लो, या मेरे पास डायमंड रिंग है वो ले लो, तो कितना अजीब भिखारी हुआ ना वो, बेगर। तो उसी तरह नित्यानंद प्रभु जो है, he is in the mood of beggar, but he is not asking something, he is giving. He wants to, no, this is not coming, he is Prabhuji, this is not coming. So he is in the mood of giving, right? कि मुझे कृष्ण भावनामृत देना है। तो प्रश्न वही आता है कि प्रभुपाद यूएस क्यों गए? He went in that same mood of compassion of नित्यानंद प्रभु। तो अभी आप सोचिए, अमेरिका जो है, ठीक है, इवन नाउ एंड इवन इन 1960s, इट इज सच एन एडवांस्ड कंट्री, वहां पे इतनी भौतिक सुविधाएं हैं। तो अभी अगर किसी को वहां, एवरीवन इज लिविंग वेरी कंफर्टेबली, वहां पे कुछ तकलीफ नहीं है, ऐसा हम लोग का जो रोज मारा मारी है, पानी नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, वहां पे ऐसा बेसिक नेसेसिटीज, highways, I drove almost 800 to 900 miles in 1 week, यहाँ से वहां से वहां, इधर सब ड्राइव करके, एक खड्डा नहीं, roads are free of potholes, what advanced civilization they have. So if Prabhupada, अगर कोई आ रहा है आपको देने के लिए, means what? Means that he has something higher to give, then only you will accept ना। अगर मेरा सब कुछ सही चल रहा है तो मेरे को आपसे लेने की कुछ जरूरत क्या है? मैं आपसे तभी कुछ लूंगा जब आपके पास मेरे से कुछ हायर है। करेक्ट? मेक सेंस? राइट? So that is what Prabhupada, if you see in his preface, 1 second, Prabhupada भागवतम के प्रीफेस में लिखते हैं, human society at the present moment is not in the darkness of oblivion. It has made rapid progress in the fields of material comforts, education and economic development throughout the entire world. अब ये प्रभुपाद ने 1960s में लिखा, फिर भी ऐसा लगता है कि अभी लिखा है। इट इज सो रेलेवेंट, नॉट इन द डार्कनेस ऑफ ऑब्लिवियन। सब कनेक्टेड है ना, इंटरनेट, वाईफाई, सब कनेक्टेड है अभी, राइट? बट now the main thing, right? But there is a pinprick somewhere in the social body at large, and therefore there are large scale quarrels even over less important issues. इस सब भौतिक सुविधाएं हैं हमारे पास, बट फिर भी हम सुखी नहीं हैं। There is some pinprick in our society.
There is a need of a clue as to how humanity can become one in peace, friendship, and prosperity with a common cause. Srimad Bhagavatam will fill this need, for it's a cultural representation for the re-spiritualization of the entire human society. तो पहला रीजन प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रभुपाद क्यों गए, वो खुद ही बता रहे हैं इस अपने प्रीफेस के थ्रू, that I am going to give something higher, which those people are lacking. You know, we think we are very happy with all these material comforts, but no, we are, जैसे कि इस परपट में भी लिखा है, सो के प्रभु जी नहीं चल रहे तो जाने दो, इस परपट में भी प्रभुपाद ने लिखा है, so I was hearing His Grace Radheshyam Prabhuji's class. Very nice point he made. We always have choice, कृष्ण और माया के बीच में, but कृष्णा जो है, he feels far far away. But please hear this. Very nice point he made. He said, Maya is easily available, easily approachable, right? And very attractive. Easily available, easily approachable, and very attractive. So it is very easy to go into that. But what happens when we choose Maya, we get suffering. We get a punch in our nose. So first thing is, Prabhupada went to give something higher. And second, he went because of his unlimited compassion. जो कि प्रभुपाद का जो मूड है, प्रभुपाद का जो प्रेयर्स है, प्रभुपाद का जो मूड है, we will see in his prayers. I will read few of his prayers which he wrote on Janluta, right? Obviously he wrote a big poem, but we don't have time to discuss everything. But one or two prayers we will see. अगर किसी ने ये बुक नहीं पढ़ा है, चैतन्य चरण प्रभु जी का बुक है, Prabhupada's prayers, you should read this book. Beautiful book it is. So first prayer Prabhupada is saying, okay, Boro kripa kaile Krishna adha mere pratir. What Prabhupada is saying, ki, oh Krishna, you have been so merciful to me that you have given me this opportunity to serve. So Prabhupada is saying that, just imagine he went with only 40 rupees, not even dollars. And Prabhupada writes, when I got down at Boston airport, I don't even know whether to go left or whether to go right. ये बहुत, मैं आपको अभी टाइम नहीं है, मैं तो कभी और मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा. जब ये अभी मैं यूएस गया, ठीक है, मैं तो मस्त बिजनेस क्लास में, एकदम मस्त जा रहा हूँ. एंड इंस्टेड ऑफ माई फ्लाइट लैंडिंग इन न्यूयॉर्क, लैंडेड इन बॉस्टन बिकॉज देयर वाज अ स्टॉर्म इन न्यूयॉर्क. एंड 1 घंटा तो फ्लाइट ऊपर हवा में ही घूम रहा था बिकॉज एयरपोर्ट से कनेक्शन ही नहीं हो रहा था. ठीक है, देन फाइनली दे लैंडेड इन बॉस्टन विच इज 5 hours ड्राइव, okay, from New York to Boston. Okay, then at Boston it is waiting 1 hour to get the gate because all flights are going to Boston, so there is no gate available. Then what they are doing, then airline is saying, okay, we have arranged hotels for all of you, you will get an email. And hold and behold, I am a business class passenger, okay, but from all the 300 people who have flown, only 3 people including me never got the email. And I am fighting over there on the airport with the airline desk, ki where is the email, I need to go. Okay, so now my flight was through, my booking was done through British Airways, but flight was through American Airlines. So I went to British Airways help desk. They said, you flew through American Airlines, we don't own you, you contact them. What nonsense. Their ticket is, my ticket says, ticket purchased through British Airways. No sir, you flew through American Airlines. And American Airlines, there is no desk. तो ब्रिटिश एयरवेज वालों से तो मेरा इतना झगड़ा हो गया, आई गॉट सो अग्रेसिव. दे सेड, सर नाउ यू स्टॉप, अदरवाइज आई विल कॉल पुलिस. तो मैं बोला, बाबा जान दो, अभी फॉरेन कंट्री में पता नहीं है लोग क्या कुछ तो करेंगे. सो then I am searching American airline help desk, there is no help desk only. That time I realized what Prabhupada said, that I don't know where to go, left or to go right. And when I came out of the airport,
एंड हम लोग को लगता है कि यूएस बहुत एडवांस कंट्री, व्हेन यू कम आउट ऑफ इंडियन एयरपोर्ट यू विल हैव 10 डेस्क, टैक्सी टैक्सी टैक्सी, इरिटेशन लगता है लेकिन अच्छा लगता है. वहां मैं बाहर इंडियन यूएस एयरपोर्ट में गया, नो हेल्प डेस्क, हाउ टू बुक टैक्सी, इफ आई हैव टू गो टू न्यूयॉर्क, विच होटल टू गो, वेयर टू गो, कुछ पता नहीं है. रात को 12 बज रहे हैं, ऊपर बारिश गिर रहा है, वेयर टू गो, व्हाट टू डू, कंप्लीटली हेल्पलेस. देयर इज नो हेल्प डेस्क अवेलेबल. And I was continuously meditating how Prabhupada at the age of 70 with 40 rupees would have come. And I was thinking I have to go to New York. Prabhupada also went to US through Boston only. So maybe I thought कि मेरे को Prabhupada Boston के through ही शायद लेके जाएंगे New York. So we can't imagine what he went through. Is this working? I want to show something. That's why I am little curious to show this. Then, so first Prabhupada is saying that I am, okay, so Prabhupada is saying that I am not, what you say, I am very grateful that this opportunity has come. He is going through so much of inconvenience. And then Prabhupada says, Nahe keno aniben ei ugrasthane. Same thing, what? Prabhupada is calling America as Ugrasthan. Ugrasthan means miserable place. Why? Because Prabhupada is saying that Krishna, without you, any kind of prosperity is actually poverty. And then Prabhupada says after 2-3 lines, Vasudeva katha ruchi nahe se prasanna. So he's saying that, let me go with a mood of compassion. Okay. Let me, why compassion? Because he wanted to share what he already had. Can people see? Can anyone? So this is where it all started. 26 Second Avenue Matchless Gift Shop. Okay. अभी ये कौन से स्टाइल से मंदिर दिखता है बता दो मेरे को. It's such a small room. And ये तो अभी का रेनोवेटेड फोटो है जो मैंने खुद ने खींचा है. ये मैं खुद के खींचे हुए फोटो बता रहा हूँ. वैसे तो बाकी इंटरनेट पे जाएंगे तो बहुत फोटोज मिलेंगे, बट दिस इज लेटेस्ट फोटो, ऑल रेनोवेटेड. आप सोचिए 1965 में कैसा दिखता होगा. ठीक है. फ्रॉम विच एंगल दिस विल लुक लाइक टेम्पल, बट दिस इज वेयर प्रभुपाद स्टार्टेड. एंड यू कैन सी इन बिटवीन, ये जो बीच में है, इट सेज एडवर्टाइजिंग होर्डिंग, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, एवरी मंडे 7 PM भगवद गीता क्लासेस, वो उसका वो है. ठीक है. एंड देन यू सी हाउ इट इज इनसाइड. ओके. इसके पहले ये फोटो दिखाता हूं. दिस इज द फोटो ऑन लेफ्ट हैंड साइड, 22nd Second Avenue, वेयर पीपल आर हैविंग प्रसाद. व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो थ्रू दिस फोटो, 2 पंगत बैठा है, रूम खत्म. सी, दिस इज 1 पंगत, दिस इज 2nd पंगत, बीच में थोड़ा जगह है, रूम खत्म, ना इधर जगह. दिस इज वेयर इट स्टार्टेड. इधर कितना पंगत बैठ सकता है आप सोचो, और कितना बड़ा हमारा मंदिर है. So that is where Prabhupada started. And then if you see this painting, okay, on Prabhupada's top, okay, this is painted by Jadurani Mataji. Okay, अगर अभी आप वो पेंटिंग को थोड़ा क्लोजली देखोगे तो लगेगा कि किसी 4 साल 5 साल का बच्चा जो हम लोग क्रेयॉन देते हैं और ये सब दे देते ना, वैसा लग रहा है. बट सी Prabhupada, just what he saw, Prabhupada did not see external. Prabhupada saw that spark of spiritual service. Okay, so going back, right? This is how Prabhupada is sitting, and this boys and girls are sitting, coming in any dress and completely intoxicated. So when I went to West Virginia, okay, very interesting experiences I had this time. So I was walking from my guest house towards the temple. तो मैं चल रहा था, सडनली एक गाड़ी मेरे पास आके रुका, और वो मेरा फ्रेंड था, तो वो गाड़ी आके रुका. तो ही सेड, इंग्लिश में पूछा ऑब्वियसली, कि वो लोग भटक गए थे शायद या कुछ थे, एकदम डिस्ट्रेस थे, इधर कुछ अच्छा देखने के लिए है क्या. एंड ही वॉज लुकिंग कंप्लीटली ड्रंक. ओके. एंड मतलब बॉडी डिशेल्ड, मतलब वी आर नॉट यूज्ड टू सीइंग दैट काइंड ऑफ पीपल, राइट. तो वो कंप्लीटली डिशेल्ड, थोड़ा स्मेल आ रहा है, और पूरा गाड़ी भी ऐसा ही है उसका गंदा सा. तो इसे कुछ अच्छा इधर देखने के लिए है क्या. तो अभी आपका क्या रिएक्शन होगा.
अब मेरे जैसा मन बुद्धि का तो रिएक्शन क्या था, कैसा आदमी आ गया है, बोला नहीं है कुछ भी नहीं है, जाओ। ठीक है, फिर मैं और मेरा फ्रेंड डिस्कस करने लगे कि क्या कैसे कैसे लोग आते हैं, क्या बेवड़ा, मतलब पी के आया, ये आया वो आया। देन वी स्टॉप्ड. He said, boss, this is the exactly kind of people Prabhupada was preaching and came to preach. We are trying to see through externals. But Prabhupada came exactly to preach same kind of people. So we immediately went back. भाग के गए हम लोग उसको, और गाड़ी को रोका, wait, 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 wait. फिर हम लोग ने उसको बोला that there is a nice temple, you can go and take darshan. And then there is nice restaurant, you can take food. Oh, there is food? बोला yes, there is food. तब समझ में आया प्रभुपाद ने प्रसाद कल्चर क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि डीटी से इंट्रोड्यूस हुए ना, फूड से हो जाते हैं लोग अट्रैक्ट. सो बड़ा खुश हो गया, ओ देयर इज फूड. मैं बोला यस यस, देयर इज नाइस रेस्टोरेंट, यू कैन टेक फूड, एंड यू कैन गो एंड पार्क हियर. अब उसको डीटी से क्या समझाने का, तो ठीक है, अभी उसको कैसे तैसे तो समझाया कि जाओ पार्क करो, दर्शन लो थोड़ा, यू विल फाइंड पीस, ये वो. सो I was just thinking, we have this whole brand of ISKCON, we have this big temples and everything, and now preaching is so difficult. Prabhupada preached during that time when there is no ISKCON. महाराज का एक क्लास था, किसका, ब्रज बिहारी प्रभु का किसका तो क्लास सुना. जब प्रभुपाद यूएस गए तब उनका ऐसा प्लान नहीं था, ओके आई विल स्टार्ट 7-day भगवत गीता कोर्स, journey of self discovery course, and I will do this, I will do that. No. So he went and he just, so many difficulties he went through. But, right, and I want to show something. So this is Tompkins Square Park, okay, where Prabhupada did his first Kirtan, okay, and you can see in Tompkins Square Park, Prabhupada is sitting, and you can see how these boys and girls with, no shaving, long hair, this, that, they are sitting and chanting. But what mood Prabhupada went? So in 22nd Second Avenue they have kept one डायरी, मतलब प्रभुपाद का डायरी में से उन्होंने पूरा एक अच्छा, जैसा ये बुक है वैसा एक बुक बनाया. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जो मैंने फोटो लिया और उसको मैं दिखाता हूं अभी. ठीक है, सो दिस इज Prabhupada's reflection on Gaur Purnima. He is staying in 22nd Second Avenue and he is in Gaur Purnima day. तो उन्होंने ये पूरा, ये उनका प्रभुपाद का हैंडराइटिंग है जो ट्रांसक्रिप्ट है, जो मैंने फोटो लिया है, और मैं अभी इसका एक पार्ट है जो मैंने यहाँ पे लिखा है. सो व्हाट इज प्रभुपाद सेइंग? सो स्टार्टिंग पार्ट में प्रभुपाद पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि ओ टुडे इज गौर पूर्णिमा, devotees must be celebrating in Mayapur and Vrindavan Dham, and I am here in 22nd Second Avenue in US. But then he continues, but I have come here to serve the Lord and not for personal happiness. I am prepared to live in hell even if I am able to serve the Lord. Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted that his mission should be propagated all over the world. And that is my objective. I do not mind the inconvenience personally felt. This was Prabhupada's mood. So on this historic day when he departed to US, this is the mood he was carrying. That I am going to serve my Guru. I am going to fulfill Chaitanya Mahaprabhu's mission. And I will not mind even if any personal inconvenience is felt. And when different types of people started coming, he was not judging them. मेरे को इतना रियलाइजेशन हुआ ना कि कैसे हम लोग जज करते हैं लोगों को. यहाँ पे भी अरे कैसे मंदिर में आ गया, कैसे आ रहा है, ये है. Now Janmashtami is coming. We have to treat everyone who is coming to our temple as Radha Govind Dev Ji's guest. कि नहीं, ये भगवान के चरण में आए, इनकी we have to see that spark of devotion in them and give them Krishna. प्रभुपाद के जैसे अभी मैंने बताया 22nd Second Avenue में वो छोटे से रूम में बैठे थे और सब ड्रग एडिक्ट्स आते थे. तो उसमें से एक ड्रग एडिक्ट ने प्रभुपाद को पूछा, और प्रभुपाद इज टॉकिंग अबाउट हाईएस्ट फिलोसफी, ये लव ऑफ गॉड इन द मूड ऑफ राधा रानी, एंड प्रभुपाद इज सेइंग कि वैकुंठ. सो वन ऑफ द पर्सन आस्क्ड, स्वामी जी व्हाट इज वैकुंठ? अब क्या जवाब देंगे आप? एक ड्रग एडिक्ट है जिसको कुछ मतलब
कृष्णा कौन, गॉड कौन, कुछ पता नहीं है. But Prabhupada was having so much of compassion. Prabhupada was thinking कि how I can connect this person to Krishna. So Prabhupada ने बोला Vaikuntha means ocean of LSD. LSD was the name of the drug. हाँ? तो प्रभुपाद ने बोला वैकुंठ मीन्स ओशन ऑफ एलएसडी, क्योंकि वो एलएसडी लेके आया था ना, तो ओशन ऑफ एलएसडी. तो ही सेड इमीडिएटली आई वांट टू गो देयर. वेरी गुड. So this is how Prabhupada connected people to Krishna. And now in this purport, Prabhupada is saying, he came to give this culture of match. MATCH. Okay, what is match? So he came to establish this, people who were intoxicated, people who were attached to women, people who had so much of pride. He came to give this, culture of Brahman, culture of match. So what does match stands for? M stands for mercy. I'll just read. Okay. So M stands for mercy. Mercy means no meat eating. So he said, we cultivate, qualities like patience, tolerance, courtesy, kindness, right? So not giving, I would say, not inflicting pain or suffering to any other living entities, okay, for no reason. So M stands for, so Prabhupada came first to give the match formula. Mein M stands for mercy. Then A stands for austerity. And austerity is defeated when we take intoxication. So Prabhupada said no intoxication. So austerity, very important, very nice, right? In Bhagavad Gita, Krishna gives austerity at different levels. He says austerity of speech, to say simple, kind words. Then in Gita, Lord Krishna says austerity of mind, most important. And 5S he gives. Very nice. I'm telling this for all myself because so much of greed is there, and envy is there in our heart, my heart. So first he says, Krishna says, austerity of mind. First S is satisfaction, giving up greed. Second S, simplicity. Third S, silence, controlled speech. Fourth S, self-control or regulating senses. And fifth S, sanctification, which is purifying one's existence. तो इस तरह प्रभुपाद ने क्या किया, एक प्रोसेस दिया जिससे हम हमारे इंटरनल एक्सटर्नल स्पीच माइंड को ऑस्टियर करके क्लीन कर सके, राइट. देन T स्टैंड्स फॉर ट्रूथफुलनेस. दैट गेट्स डिफीटेड व्हेन वी डू गैम्बलिंग. And Prabhupada is saying that how we should be always truthful. And then C stands for cleanliness. Cleanliness is disturbed or violated when we engage in illicit sex. Okay. And here Prabhupada has taught that how we should maintain internal and external purity. Okay. And practice, external purity, cleanliness is maintained by regularly bathing. Now this is interesting, right? So जो मैंने 26 सेकेंड एवेन्यू का फोटो दिखाया जहाँ प्रभुपाद बैठे थे, उसके एक साइड में ऐसा प्रभुपाद बैठे, राइट हैंड साइड में एक बाथरूम है, ठीक है. और प्रभुपाद ने फर्स्ट इनिशिएशन सेरेमनी कंडक्ट किया. मैं उसका फोटो लेना भूल गया एक्चुअली, या शायद है मेरे पास. और उसमें प्रभुपाद ने फिर एक लेटर लगाया और चिपका दिया बाथरूम के आगे, और उसमें लिखा, devotees who got initiated should follow the following principles. Okay. Remain clean and take bath regularly. Okay. Chant Hare Krishna Maha Mantra 16 rounds. Okay. Don't engage in frivolous activities and gossip. Okay. Read Bhagavad Gita. ऐसा 5-6 instruction दिया. What level Prabhupada went to teach them? So, and last,
Most important, H stands for holy name. So Prabhupada came to give holy name, you know, to all everyone, to purify our mind, to purify our existence, okay, and to develop, not develop, awaken the dormant love which we already have. So this is very interesting, right? So four Kumaras, they also went to Brahmaji once and said Brahmaji, father, you know, senses जो है, they naturally get attracted to sense objects. So how do we avoid getting senses attracted to sense objects? Correct? We are naturally getting attracted. तो हम लोग ये सब natural कर रहे हैं. तो क्या करें? तो ब्रह्मा जी जो है वो खुद अचंबस में पड़ गए. क्यों? मतलब अभी देखिए ब्रह्मा जी जो है उनका पूरा बॉडी इंटेलिजेंस का है और उनके 4 सर है, हमारे तो एक ही है. फिर भी वो एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए कि क्या करने का. क्यों? क्योंकि वो खुद he himself had got attracted to one of his creation, right? He got attracted to Mother Saraswati. So Brahma ji says, I also don't know what to do. So let's call Lord Vishnu. So Lord Vishnu comes in Hamsduta avatar. And in that avatar, Lord Vishnu instructs Brahma ji and 4 Kumaras, saying that the senses right now are like iron and sense objects are like magnet. तो natural attraction होगा ना, iron will get attracted to magnet. But if you convert senses to wood, then wood will not get attracted to magnet, right? So he says, so Lord Vishnu explains that how you have to purify your senses. Right now our senses is in the stage of iron and it is getting attracted to magnet. So Amsduta Avatar explains that how we should purify our senses. And then he nicely explains that how, it's so beautiful. He nicely explains that how we can purify our senses. How to get strength. We want to do so many things, but we are not able to do. So he says once, abhi Janmashtami aa rahi hai. He says once you pray to Lord Krishna, that Krishna, I want to serve you. That's what Prabhupada did. He just sparked that spirit of devotion. So he says, once you go and pray to Krishna, Krishna, I want to serve you. Then what Krishna does? He is situated in our heart. So he takes that prayer very seriously. And he really gives strength from within. Okay, now we are at this stage, do 1% extra, do 2% extra. So we are able to do something better than what we are doing today. So then it gets into a cycle, right? We pray, we get strength, we are able to do something better, then we again pray, then we, so it keeps coming into a cycle. So that's what Hamsduta is explaining, that, give what you say, offer prayers to Krishna, that how you want to serve him, and that will keep giving you strength. And then Prabhupada, what he did, he said, along with that, he gave this formula, match formula, to establish character. Character is very important. Now on this part, I would like to say one thing. कल ही मैं महाराज का लेक्चर सुना था, बहुत महाराज ने सुपर पॉइंट बोला. बलराम जयंती था कल, राइट? तो बलराम जी किल्ड रोमहर्ष, राइट? So he said Romaharsh was following all 4 regulative principles. Correct, na? He was not engaged into intoxication, meat eating, gambling, or illicit sex. He was following all 4 regulative principles. And he was, studying Vedas. And Maharaj was explaining that if in today, Romaharsh will come to Bombay and start giving Bhagavatam class, he will be considered as the most pious man of the city. And thousands of people will come to hear his class because he's so pure.
So the objective, the goal is not to just follow those four regulative principles. What is more beyond that? Which is what Lord Balram was trying to teach us. And what Prabhupada is saying in this purport is to conquer our pride. You know, if we have that pride, what we start doing, we start disrespecting our Guru and our Vaishnavas, God brothers. So to teach that lesson, that how, even, Prabhupada bolte ki in Kalyuga, even pauper is proud of his penny. So we can get pride of even our austerities, our four regulative principles, our devotional service, and that is very dangerous, which Lord Balram taught through his example, that Romharsh externally was the perfect person, free from all vices, but mentally he had pride. So it is very, very important to overcome that pride. So that's why Prabhupada in his teachings have kept on re-emphasizing. And what you say, Chaitanya Mahaprabhu, when he came, he very prominently gave this teaching of Taranadapi Sunichena Taruriba Sahishnuna Amanena Mandena Kirtanya Sadahari. That we have to extremely, so in this context, overcoming pride means always remaining humble and being respectful to our God brothers and God sisters. Okay, so now, what you say, Janmashtami is coming up and all these beautiful festivals are coming up. So what we should be praying? So we first can pray in the spirit of Prabhupada. That let me become an instrument in the hands of my Guru. One more thing I forgot to tell. We have 10 minutes. In the spirit of that devotion, right? I went to West Virginia, New Vrindavan. You have to see their palace of gold. Okay, made by Prabhupada's devotees and disciples for pleasure of Prabhupada. They started construction when Prabhupada was living, but they could not complete it. Let me tell you, Prabhujis and Matajis, कभी भी लाइफ में चांस मिलेगा ना, प्लीज न्यू वृंदावन जाना आप लोग. तपोभूमि है वो, तपोभूमि. मजाक नहीं कर रहा हूँ. वी वर इन यूएस, but I was feeling as if I am in some, Vrindavan or something real. It is such तपोभूमि, क्योंकि वहां पे भक्त लोगों ने बहुत तपस्या की है, बहुत तपस्या की है. तो वहां पे भक्त लोगों ने, जो प्रभुपाद ने यहाँ पे बोला ना, जो प्रीफेस में बोला, ह्यूमन सोसाइटी नीड्स अ क्लू ऑफ पीस, और जो परपट में भी लिखा है, वी नीड पीस, राइट? बट वी आर picking up quarrels and small issues. How to get peace, how to get happiness? प्रभुपाद के शिष्यों ने और प्रभुपाद ने अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताया. पैलेस ऑफ गोल्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरीथिंग इज लिटरली मेड ऑफ गोल्ड. Second, no outsider laborer worked there. Only devotees worked. And prominently 50 devotees from 17 countries worked there. And third, everything was made in-house. They didn't knew, right? अभी ग्लास का कटिंग कैसे करने का है, और वो जो प्रभु जी जो टूर दे रहे थे बहुत अच्छी तरीके से बता रहे थे. अभी हमको कुछ भी सीखना है, वो चैट जीपीटी, गूगल से क्वेश्चन मारो, तुरंत जवाब आ जाएगा. There the devotees want to know, okay, how to do this cutting of glass, how to stick this, how to do this. They had no information. So what they used to do, they used to buy books. They used to read books. They used to experiment. And then they do it. और क्या कला है. वहां जाने के बाद तो मैं एकदम संतुष्ट हो गया. अभी किधर यूएस में जाने का जरूरत नहीं है. Such a beautiful place. And एक प्रभुपाद का उन लोग ने रूम बनाया, मतलब उन्होंने ऐसा सोचा था कि ये प्रभुपाद का बेडरूम होगा, तो प्रभुपाद का बेडरूम बनाया. अच्छा बड़ा रूम है वो. एंड उसके ऊपर है ना एक कार्विंग किया हुआ है. सच अ ब्यूटीफुल. वो जगह का फोटोज नहीं ले सकते, अदरवाइज आई वुड हैव टेकन फोटोज एंड शोन. फोटोज आर नॉट अलाउड. सच अ ब्यूटीफुल कार्विंग.
एंड वो प्रभु जी बता रहे थे कि एक माता जी ने किया है वो, जिन्होंने 45 to 50 days अपने कमर पे लेट के पूरा एक एक बेड के कार्विंग किया, और वो जब खत्म हो गया उसको ऐसा ऊपर चिपका दिया. When you will see that place, you will realize कि what devotion means, what surrender means to Guru. तो इस पे मैं दो मुद्दा कहना चाहूंगा, और मैं चाहता हूं कि ये जो मैं अभी कहने वाला हूं लोग सुने यूट्यूब पे और इस पे. सो मच ऑफ दिस यूट्यूब इंस्टाग्राम इस पे चल रहा है, इस्कॉन अंग्रेजों का मंदिर है, इस्कॉन अंग्रेजों का मंदिर है, इस्कॉन अंग्रेजों का मंदिर है. अरे आप क्या जानते हैं इस्कॉन के बारे में, और आप क्या जानते हैं कि वो अंग्रेजों ने क्या किया है प्रभुपाद के लिए. हाँ, इन वन पर्सपेक्टिव देखा जाए तो ऑफकोर्स प्रभुपाद इज एम्पावर्ड पर्सन, वैकुंठा मैन, बट वन पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा तो दोस इंग्लिश पीपल आर सर्विंग एन इंडियन ओनली, ही इज इन इंडिया बॉडी, इंडियन बॉडी. So first of all, we should be happy that all the foreigners are worshipping an Indian person and they are worshipping an Indian God in one perspective. Secondly, what devotion जो वो अंग्रेजों ने किया हम कर ही नहीं सकते हैं. So much dedication and devotion of for Prabhupada, where they built this palace of gold. Forget that, all they built all these big temples. They came and they, on Prabhupada's instruction, they went to so many places all over the world with meager facilities. कोई facility नहीं था उनके पास. वृंदावन आके रहे, मायापुर आके रहे, बॉम्बे जूहू में आके रहे. किसने किया? ये सब अंग्रेजों ने किया है. All these big temples, Vrindavan, Gurudas Prabhu, Juhu temple, Giriraj Maharaj, Mayapur, all this Bhavanand Prabhu and all these people surrendered souls of Prabhupada. हम ये क्या, ये लोग कुछ जानते ही नहीं है, खाली बस इंस्टाग्राम रील अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बस कुछ भी बोलते रहो. इस्कॉन अंग्रेजों का मंदिर है, आओ इस्कॉन जाओ, देखो बाहर अंग्रेजों लोग क्या कर रहे हैं प्रभुपाद के लिए. एंड इट फील्स सच अ मैटर ऑफ प्राइड व्हेन यू गो टू दिस फॉरेन कंट्रीज एंड व्हेन यू सी पीपल इन फॉरेन बॉडी ग्लोरीफाइंग प्रभुपाद. आई वेंट टू भक्तिवेदांत मैनर ऑल्सो. भक्तिवेदांत मैनर में क्या है, इट्स अ बिग प्लेस, सो दे हैव दिस सेवा, यू बुक अ स्लॉट एंड देन द डिवोटीज कैन गिव यू अ टूर. So I was just walking across and एक टूर बाजू में चल रहा था. One foreigner person of कुछ 50-60 years का होगा, and he was with a group of devotees, and with so much of pride he was saying, our Prabhupada, and उनका accent भी कैसा रहता है ना, our Prabhupada came via ship, boat, cargo ship, 1965 with $40 and he established this. Such a matter of pride, So that is what ISKCON is. Please come before releasing these reels. And second, all of us devotees should have firm conviction. And second, what is ISKCON doing to the economics? This whole Vrindavan, one devotee. मैं नहीं बोल रहा हूँ, वृंदावन के रहने वाले लोग बोलते हैं कि today Vrindavan is flourishing because of ISKCON. प्रभुपाद ने क्या किया? पूरे विश्व में इतने सारे टेम्पल्स बना दिए, इतने सारे भक्त बना दिए कि उनके घर में डीटीज है. तो सब सामान एक्सपोर्ट कहां से होता है? वृंदावन से होता है. सब डीटीज का सामान, डीटीज के ड्रेसेस, सब ये वो, राइट. और आपको अभी मैं सीए इन्वेस्टमेंट एडवाइस देता हूं, ठीक है. अगर किधर इन्वेस्ट करना है तो जहां देख लो किधर इस्कॉन टेम्पल खुलने वाला है, ठीक है. क्योंकि जहां इस्कॉन टेम्पल खुलते हैं आजू बाजू पूरा it's flourishing, because the whole civilization comes and everything. यहाँ का you take this example, Radha Govind Mandir, all these people, of course they are serving also, but they are flourishing. Parking facility they are providing, and then वो जूस वाले का धंधा अच्छा चल रहा है, वो पकोड़े वाले का धंधा सबका मस्त चल रहा है, because so much too many people come. So it is, temple is a big economics, So what we know about, ISKCON ki kya hai? So that is very important. And second important thing is, then me and my friend, he is also our god brother, we were thinking कि यार क्या मतलब क्या लोगों ने कर दिया, और हम लोग ऐसा भूमि में हम लोग क्या प्रार्थना कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं. So much people have done for Prabhupada. What can we do? And what we should be praying? So उसने मुझे एक अच्छा मेडिटेशन दिया. बोले देख, यहाँ पे अपने महाराज ने और सब डिवोटीज ने एक ही चीज किया है,
वही हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं. बोले क्या? बोले दे हैव जस्ट सर्व सरेंडर टू द गुरु, you know, and they have served ekdam selflessly. So we should pray for really unconditional and unmotivated selfless service. That is what we should be praying. So anyway, I don't want to end on a discouraging note. So on an encouraging note, what can we do for Prabhupada? So ये क्वेश्चन हमारे मंदिर के एक वरिष्ठ वैष्णव ने हिज होलीनेस राधानाथ महाराज को पूछा कि महाराज, अभी प्रभुपाद आए, पूरा उन्होंने इस्कॉन एस्टेब्लिश कर दिया, पूरा वर्ल्ड वाइड मूवमेंट, उनके बड़े बड़े शिष्य ने, गुरुदास प्रभु, भावानंद प्रभु, ये लोग ने सब बड़ा बड़ा टेम्पल एस्टेब्लिश कर दिया. फिर हमारा गोपीनाथ टेम्पल आया, उसका अपना एक स्ट्रगल था, तो वो सब बड़े बड़े भक्त लोगों ने एस्टेब्लिश कर दिया. फिर हम क्या कर सकते हैं? हमारे लिए क्या बचा? करेक्ट ना? व्हाट इज आवर रोल नाउ? तो महाराज ने एक बहुत ही सुंदर जवाब दिया और बहुत ही अच्छा, मतलब वेरी व्हाट यू से होप गिविंग एंड इंस्पायरिंग एंड प्रैक्टिकल, जो कि मैंने बहुत साल पहले सुना था और उसको मैं अभी आचरण करने की हमेशा कोशिश करता हूँ. महाराज ने सिंपल एक जवाब दिया. महाराज ने बोला, सुनना है क्या बोला? महाराज ने बोला, जस्ट बी अ गुड एग्जाम्पल. दैट्स इट. जस्ट बी अ गुड एग्जाम्पल. Follow whatever has been given to us, serve the Vaishnavas nicely, be a good example. That's it. People will become Krishna conscious just by seeing you. That is the best service you can do to Prabhupada, by following his instructions nicely and being a good brand ambassador of his teachings, by having good conduct, character, and being a good example. That's it. So what you say? Yeah, time is up. So I just wanted to summarize that, this verse very nicely talking about what Prabhupada came. Prabhupada is talking about this whole Brahmanical culture, and that is what Prabhupada came to give this culture, of all these 4 regulative principles, holy name, and attitude of service. And he changed the perspective, right? He said, instead of seeing the world as a source of enjoyment, see the world as an opportunity to serve. And when you will live with these principles of match, okay, mercy, austerity, truthfulness, cleanliness, and holy name, and then try to serve, our life will be perfect. So as Janmashtami is coming, and Prabhupada's appearance day will come, and so many beautiful auspicious days will come, we can just serve, pray for one thing, that Lord, please always engage me, keep me engaged in your service. Somehow or the other, keep me engaged in your service without pride, lust, anger, greed, envy, illusion. Let me serve you with a nice, pure heart. Lot of, what do you say, impurities there in our heart. Lord, I know, I'm working on it. And please help me, to continue to continue to serve you in a nice way. And of course, many devotees will come, to take darshan. So let's serve them with lot of respect and try to connect them to Krishna in a nice way, right? The way Prabhupada was trying to connect. And thoda personal inconvenience हम लोग को होगा अभी next 1-2 हफ्ता. So let's try to tolerate as much as possible and try to give Krishna to others. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Sorry if I spoke something beyond my realization. Any questions?